बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज मैंने आपको कहा था, जैसे शॉर्ट्स में मैंने बोला है कि मैं सिर्फ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम नियर बाय है। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन कांस्टेंट, और इसको हम केएम से डिनोट करते हैं। ये है क्या माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन? ये क्वांटिटेटिव स्टडी है एंजाइम कैटालिसिस की। एंजाइम क्वांटिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, नॉट डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन की जगह अपनी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। ये कहती है कि और माइकल मेंटेन इक्वेशन माइकल एंड मेंटेन इक्वेशन दो मेथड बताती है जिससे हम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है एंजाइम यूनिट, सेकंड है कैटल। एंजाइम यूनिट डिनोटेड बाय यू, 1 U इक्वल टू 1 माइक्रोमोल per minute. Cattle cat SI unit of enzyme, that amount of enzyme which catalyze the transformation of 1 mole of substrate into product per second. अमाउंट एंजाइम में पढ़ते हैं। एंजाइम ऑफ अमाउंट ऑफ एंजाइम कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 1 मिनट at 25 डिग्री सेल्सियस। कैटल 1 कैटल इक्वल टू 1 मोल पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन बोथ यूनिट इज 1U इज इक्वल टू 16.67 नैनोकैट। अगर A प्लस B डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है और उनका इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड बाय P अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? del P अपॉन del T। Rate is directly proportional to A to power A, B concentration all to power raised to power B, where A plus B equal to order of reaction. Zero order reaction if rate doesn't depend upon the substrate concentration. First order concentration, most common reaction are first order. In biochemistry, Michaelis and Menten kinetics is one of the best known model for enzyme kinetics. It is named after German biochemist Leonard Michaelis and Canadian physician Maud Menten. The Michaelis-Menten equation arises from the general equation for an enzyme reaction is ये देख लो। E plus S, E enzyme as substrate, K1 reversible forward, backward K minus 1, ES complex, forward K2, backward K minus 2, E plus P product. Thus the enzyme combines with the substrate in order to form the ES complex, which in turn converts to product while preserving the enzyme. The rate of the forward reaction from E plus S to ES may be termed as K1 and the reverse reaction as K minus 1. Likewise, for the reaction from ES complex to ENP, the forward reaction rate is K2 and reverse is K. Therefore, the ES complex may dissolve back into the enzyme and substrate or move forward to form product. In 1913, they were working on an enzyme invertase work on sucrose and break into glucose and fructose. Sucrose invertase glucose plus fructose. At that time, they were discovered Michaelis-Menten equation. E plus O, slow binding K1 forward, ES complex, K minus 1 backward. Catalysis faster K2, EP complex release slow K2 product plus E. K1 binding K2 formation of product, K minus 1 dissociation of ES. According to Michaelis and Menten, at a relative concentration of substrate, the initial velocity of reaction changes linearly with change in substrate concentration. Whenever the velocity reaches maximum, the substrate concentration is saturated and will not affect the velocity of reaction or rate of reaction. As the concentration of substrate increase at constant enzyme concentration, the active sites on the protein will be occupied as the reaction is proceeding. When all the active sites have been occupied, the reaction is complete, which means that the enzyme is at maximum capacity and increasing the concentration of substrate will not increase the rate of turnover. ये ग्राफ आता है हाइपरबोला। गाइस, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तो पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज है और जो भी टिपिकल वर्ड्स लगते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और फिर भी आपको लगे कि कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूँगी। ये हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वर्टिकल पे Vmax है। Km, Michaelis constant, is defined as the concentration of substrate at which reaction rate
velocity reaches half of its maximum velocity, Km value vary from reaction to reaction. An equation with low Km indicates a large binding affinity as reaction will approach Vmax more rapidly. An equation with high Km indicates that the enzyme doesn't bind as efficiently with the substrate, and Vmax will only be reached if the substrate concentration is high enough to saturate the enzyme. Km value vary from 10 raised to power minus 1 to 10 raised to power minus 6 molar. The Km value used to check the affinity of enzyme for its substrate. Another definition of Km is the concentration of substrate at which half of the active sites of enzyme are saturated. Michaelis maintenance represents a hyperbolic reaction between velocity and substrate. यहाँ लिखा हुआ है V इक्वल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km क्या होता है K-1 प्लस K2 अपॉन में K1. Suppose V equal Vmax by 2. So Vmax by 2 is equal to Vmax S Vmax Km plus S. Vmax into 2 S upon Km plus S. Half of S Km plus S. S equal to substrate concentration is equal to Km. That's it for today. अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ पूछ लेना. If you like my video, please like, share, subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.